Hello everyone, welcome to the online classes. Now today we will start first chapter, that is knowing number. What we will discuss in this chapter, that is introduction, natural numbers, whole numbers, place value and face value, methods of numeration, comparisons of numbers, rounding of the numbers, estimation, estimating the sums, estimating the products, एस्टिमेटिंग द क्वेश्चन, रोमन न्यूमरल्स. तो हम ये सब डिस्कस करेंगे इन आवर फर्स्ट चैप्टर, दैट इज द नोइंग आवर नंबर्स. नाउ इंट्रोडक्शन. इन प्राइमरी क्लासेस वी हैव स्टडी अबाउट द काउंटिंग नंबर्स. आपने प्राइमरी क्लासेस में स्टडी किए होंगे काउंटिंग नंबर्स, फ्रैक्शनल नंबर्स, डेसिमल. वी हैव ऑल्सो स्टडीड अबाउट एडिशन, subtraction, multiplication and division. We shall review them here and study about natural numbers, whole numbers and the four basics operation of these numbers. First, हम discuss करते हैं what is digit. In Hindu Arabic system we use 10 symbols 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9 to represent number. हम हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स में कौन कौन से डिजिट यूज करते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9. सो स्टूडेंट्स, ये क्या हो गया? डिजिट्स हो गया. नाउ मूव टू द नेक्स्ट, दैट इज न्यूमरल. अब न्यूमरल क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ डिजिट्स डिनोटिंग अ नंबर इज कॉल्ड अ न्यूमरल. क्या होता है न्यूमरल? कि एक ग्रुप है उस डिजिट को डिनोट करता है, दैट इज नोन एज न्यूमरल. अ ग्रुप ऑफ डिजिट्स डिनोटिंग अ नंबर इज कॉल्ड अ न्यूमरल. फॉर एग्जांपल 2467, 10,798, 7,68,090. सो ये क्या हो गया? नंबर्स. और डिजिट्स कौन सी हो गई? दैट इज 0 to 9. दे आर नोन एज डिजिट. एंड व्हाट इज द न्यूमरल? कि एक ग्रुप ऑफ डिजिट्स को डिनोट करने के लिए दैट इज नोन एज नंबर्स. नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट, दैट इज नोटेशन. व्हेन अ नंबर इज रिटन इन डिजिट्स और इन फिगर्स इट इज कॉल्ड नोटेशन. अगर कोई भी नंबर को हम डिजिट्स में लिख रहे हैं या फिर फिगर्स में लिख रहे हैं, उसे हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? दैट इज नोन एज नोटेशन. I repeat it again. When a number is written in digits or in figures, it is called notation. Now move to the next, that is numeration. When a number is expressed in words, कोई भी numbers को अगर हम words में लिखते हैं, that is known as numeration. For example, 2003. तो हमने क्या किया? इसको वर्ड्स में लिख दिया 2003. 2003. तो स्टूडेंट्स इसको क्या किया? हमने नंबर को किस में एक्सप्रेस किया? वर्ड्स में. इट इज नोन एज न्यूमरेशन. अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? नाउ मूव टू द नेक्स्ट. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द natural numbers. What is natural numbers? We use 1, 2, 3 to count the objects. These are called counting numbers. So student, और इसे हम बोलते हैं natural numbers. Natural numbers does not include zero. I repeat it again. What is natural number? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and they all are natural numbers. But natural number does not include zero. Natural number zero को include नहीं करता है. As we start counting from 1, so the 1 is the smallest natural number. If somebody asks that what is the smallest natural number, that is 1, not 0. Natural number does not include 0. Natural number कभी भी 0 को include नहीं करते. What about the largest natural number? When we think about a number, there is always a number larger than it. आज अगर हम पूछे what is the largest natural number, तो इसका आंसर होगा no. Largest natural number तो हो ही नहीं सकता. जैसे मैंने 9 लिखा, फिर 10 आ गया, फिर 11 आ गया. 1 by 1 greater digits आती रहेंगी. So
Therefore, there is no largest natural number in existence. कोई भी largest natural number exist नहीं करते. अगर आपसे पूछा जाए what is the smallest natural number, that is 1. Now move to the next. अब वो वाली बात आ गई है जो मैंने आपको कही थी. Number 0 is not a natural number. I repeat it again. Natural number does not include 0. Okay? Number 0 is not a natural number. We do not start counting the number from 0. हम कोई भी काउंटिंग को 0 से स्टार्ट नहीं करते. We start from the 1. The number 0 simplify means emptiness or nothingness. तो इसमें 0 का क्या मतलब है? Emptiness or nothingness. I repeat it again. Natural number does not include 0. Okay, students? I hope you understand this concept. I hope आपको समझ आया हो. I repeat it again. Digits, that is 1, 2, 3, 4, 5, 6. And what is numeral? A group of digits denoting a number is called a numeral. And what is notation? When a number is written in digits or in figures, it is called notation. And what is numeration? When a number is expressed in a word, it is known as numeration. कोई भी digits को अगर हम words में लिखते हैं, that is known as numeration. And what is natural number? Natural number starts from 1, 2, 3 and so on. But natural number does not include 0. Now move to the next. That is the addition or multiplication of any two natural numbers is a natural number. अगर हम कोई भी two natural numbers का multiplication करते हैं या फिर addition करते हैं, जो उसका आंसर आएगा वो भी क्या होगा? It will also natural number. For example, 10 plus 21, they both are natural number. तो इसका जो आंसर भी होगा वो क्या होगा? नेचुरल नंबर होगा. नाउ 4 मल्टीप्लाइड बाय 25, तो 4 भी क्या है स्टूडेंट्स? नेचुरल नंबर. इफ यहाँ पे क्या लिखा हुआ? 0 and 25, इट विल बी 0. क्या 0 नेचुरल नंबर है? नो. नेचुरल नंबर डज नॉट इंक्लूड 0. So 4 multiplied by 25, 100. 100 is a natural number. I repeat it again, students. Natural number does not include 0. Now, but when we subtract two natural numbers, then we may or we may not get a natural number. अगर हम दो नेचुरल नंबर्स का सब्ट्रैक्शन करते हैं तो जरूरी नहीं है कि हमेशा उसका आंसर नेचुरल नंबर में ही आए. इट मे बी नेचुरल नंबर और होल नंबर. 24 minus 14, it will be 10. So basically 10 is a natural number. But 32 minus 32, क्या 0 natural number है? No. Natural number does not include 0. Now move to the next. That is even natural number and odd natural number. What is even natural number? Any number divisible by 2, it is known as even natural number. The number which are divisible by 2 are known as even natural number. अगर कोई भी number divisible हो जाता है 2 से, तो that is known as even. और अगर कोई number नहीं होता है divisible 2 से, that is known as odd. For example, 10 divisible by 2, yes. So this is a even number. But 9 divisible by 2, no, this is odd number. So odd natural numbers, the numbers which are not divisible by 2, that is known as odd natural number. For example, 1, 3, 5, 7 and 9 are odd numbers. ये एक भी number divisible by 2
नहीं है. Now we will discuss about the whole numbers. Whole number is the reverse of natural numbers. So students, whole number includes zero. A natural number does not include zero. So the natural numbers along with the number zero are called whole numbers. ये नेचुरल नंबर का रिवर्स है. नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है? 1 से. बट whole numbers क्या इंक्लूड करते हैं? जीरो along with the natural numbers. whole number में 0, 1, 2, 3, 4, 5 and so on. But in natural numbers 0 does not include. But in whole number, the natural numbers along with the number 0 are called whole numbers. Thus, every natural number is a whole number. Since 0 is not a natural number, I repeat it again, 0 एक natural number नहीं है. So, every whole number is not a natural number. जरूरी नहीं है कि हर whole number natural number भी हो. क्या 0 natural number है? No. Natural number does not include 0. I hope you understand this concept. Now we will discuss the next, that is place value and face value. Now we will discuss about the place value and face value. हम कोई भी नंबर को या डिजिट्स को डिनोट करने के लिए क्या यूज करते हैं? प्लेस वैल्यू. वी यूज प्लेस वैल्यू सिस्टम to represent a number. When a number consisting of more than one digit, each digit has value depending upon its position. For example, this is 34,576. So students, मैं क्या use करूंगी? Place value. Place value of 6, that is ones, tens, 100, it will be 1000 and it will be 10,000. तो मैंने क्या किया? नंबर को डिनोट करने के लिए क्या यूज किया? That is known as place value. We use place value system to represent a number. When a number consists of more than one digit, each digit has a value depending upon its position. In any number, we start from the extreme right hand side, that is units, ones, tens, 100, 1000, 10,000 and etc. For example, in the number 64,932. So students, again 9 2 क्या हो गया? ones, tens, 100, 1000 and 10,000. हम स्टार्ट हमेशा कहां से करेंगे? फ्रॉम द राइट हैंड साइड. Okay students, we know the place value of each one of this digit. The place value gives the value to the each number starting from the extreme right hand side. The number 2 is the ones, that is 2 units, ones. 3 stands for tens, 9 stands for 100 and 4 stands for 1000 and 6 stands for 10,000. तो हम इसको कैसे लिखेंगे स्टूडेंट? 64,932. ones, tens, 100, 1000 and it will be 10,000. Okay students, then 60,000, 4,930 plus 2, it will be 64,932. तो हम इसको वर्ड्स में कैसे लिखेंगे? 64,932. So basically ये क्या हो गया? The place value of a digit depends upon its position. तो place value हमेशा depends करती किस पे? Position पे in the number. The fixed value of a digit is the place value. Now what is place value? अगर मैं बोलूं what is the place value of 9, तो ये 9 ही रहेगी. अगर मैं बोलूं what is the place value of 3, it will be 3.
I hope you understand this concept. In our next video, we will discuss about the Indian system of numeration. That's all for today. Thank you, class.